नमस्कार मु देखिया और एबे मु अच्छे कटक रे कहीं आमर आज बिजनेस लीडर हेले ओडिशार जड़े प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट जी स्थापन करिसेंती ओडिशार प्रथम न्यूरो एवं ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर माया गंतायत चाहिए डॉक्टर माया गंतायत ओडिशार विभिन्न बड़ बड़ हॉस्पिटल सहित युक्त रही गोटे रेगुलर डॉक्टर लाइफ लीड करि पारि थाते हेले सी जानिथिले ओडिशा रे एमिति गोटे न्यूरो एवं ट्रॉमा सेंटर बेस आवश्यकता अछि सेइत पई 2006 रे तांका हस्बैंड डॉक्टर सुब्रत जेना का सपोर्ट सहित सी आरंभ करिले गोटे नुआ जर्नी जहाँ नाम हैला अश्विनी हॉस्पिटल। तबे चलंतु आज जानिबा गोटे डॉक्टर कम एंटरप्रेन्योर रो सक्सेस स्टोरी। Ma'am, welcome to Business Leaders. Thank you. Ma'am, I just the first question जो मैं मुंडे राष्ट्रीय हॉस्पिटल देखी जो मैं आसिल I want to ask you is that generally गोटे नुआ venture whenever you start सेटा जो भी sector हो माने education हो healthcare हो any sector you start there are always a lot of risk, lot of challenges. अपन पाखे option थिला to go the easy way. So why did you start this hospital? माने सबुठु मुख्य उद्देश्य कौन थिला हॉस्पिटल आरंभ करिया पछटा? Actually, this is a very interesting question. When we started this hospital, it will be not nice to say I because I started. Yes. Me and my husband, both of us started this hospital. When we started this hospital, we never realized what were the challenges. We started the hospital with an idea of giving the best health care in the state. Mainly because we have been educated outside the state, and then we thought that we should really come back and work in our own home state. And so gradually things evolved, something led to the other, something led to the other, and then finally we started this hospital. Right. So when we started, we really never thought that the challenges would be so great and so big. But now that we have put off माने आमे आम गोड़ ता भितर पूरे देला परे तापरे रियलाइज कलुनी जे हाँ चैलेंजेस तो अच्छी नहीं कि चलिया को पड़ियो करिया को पड़ियो जीव करे. So but the wasn't many neuro and trauma center Ashwini Hospital आसबा पूर्वरु नथिला कि there was no such particular like सब leading hospital कर थाए neuro sciences ऊपर तांकर थाए they give services but particularly गोटे neuro dedicated गोटे neuro and trauma center नथिला तो सेटा पई any that was that also a motivation कि नहीं एमती किछि exclusive गोटे institute नहीं तो सेट पे हमें आरंभ करिवा was that also a motivation? Yes, you are partly correct and partly because I am a neurologist. Yeah, of course. मोर जीवन सारा मो neurology ही पढ़ी. Right. And that is I am best at it. मो आउ कोनोसी डिपार्टमेंट किछि करि परिबिनी. तापरे Dr. Jena, my husband, he is a plastic surgeon and orthopedic surgeon and also he is a replantation surgeon. So सेति पे कि माने ट्रॉमा रे बहुत काम से करि परिबे बहुत काम से करिचंदी सेति पे हम भाबिलु जे न्यूरो ट्रॉमा इज एटी टिके कम थिला माने गोटे कंसोलिडेटेड नथिला थिला निश्चय किंतु कंसोलिडेटेड नथिला भाबिलु हमें आमो डिपार्टमेंट भी आउ द नीड ऑफ द आवर so we thought we would start a hospital and give the best quality service to this state. आमे जोड़ा बाहर देखिचु जोड़ा आमे पढ़िचु सेटा को आमे इम्प्लीमेंट करिवु एटा थिला हमरो स्वप्न एक्चुअली. राइट तो केते दूर माने बे नाउ सिंस इट्स बीन क्वाइट सम टाइम से स्वप्नटा साकार हला परी केते बाटो दोसुछु लागुची माने स्वप्नटा डेफिनेटली बहुत साकार हला वाला लागुची आ बहुत भल भी लगुच बहुत पेशेंट भल है कि गला परे आसिक कहते जे माने आम जीवनटा पाइलु आपण मान जोगु आमे केते हैरान नहीं था बहुत माने असुविधा तो अच्छी किंतु बहुत लोक बहुत भल भी कही कि जाइछंती आ तापरे आमे मु एक्चुअली कहि भी पारबी जे आम सेंटर रे वर्तमान जेहेतु मु गोटे न्यूरोलॉजिस्ट आम न्यूरो साइंस यूनिट इज वेरी consolidated and very strong. We have the full infrastructure for doing all the modern, recent and whatever can be done anywhere else. Same the trauma pain भी हमें भी equipped है जो and
Yeah. So ଆପଣଙ୍କର generally, you know, hospital it's a 24/7 anybody any because it's a trauma care center and neuro center. So हठात किसी भी हेले at any time of the day anybody can come to the hospital. So how equipped are you to handle such cases at, you know, even at odd hours, midnight? We are absolutely equipped Okay. to work 24/7 at odd hours. Actually odd hours रे ही आसुंती आउ आमे देखु जे सब बेले केमतिया डाक्टर रहिथिबे नर्सेस रहिथिबे फार्मासिस्ट रहिथिबे हमर इमरजेंसी रूम इज वेरी वेल इक्विप्ड आसु आसु पूरा तांको रिहैबिलिटेट करू तांको स्टेबलाइज करू जहाँ जहाँ दरकार व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वी डू इट या But empty cases we generally देखा जाए there are other complications also. I mean neuro case रे भी था कि there can be complications in cardio or anything else. So do you have all those facilities to take care of such? I mean I think you are very very knowledgeable regarding this. Okay. माने कहीं ना आमे जेतବେଳେ स्टार्ट कलु न्यूरो और ट्रॉमा सेतବେଳେ आमे खाली कंसंट्रेट करथिलु न्यूरो एंड ट्रॉमा Okay. तापरे विथ टाइम आमे रियलाइज कलु जे न्यूरो संगे तो कार्डियोलॉजी रा भी प्रॉब्लम अछि सेतिबे कि वी हैड टू स्टार्ट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट so that the patients who have neuro problem and cardiac problem can be handled. Same thing trauma रे जेतबेल को polytrauma हुए माने more than 2 organs मुंड हेतिबो chest हेतिबो abdomen हेतिबो limb हेतिबो सब इंजुरी हो इंजुरी हेले एते ब्लड लॉस हुए हमको हुए सेमान किडनी प्रॉब्लम भी आस जाए renal shutdown तेबे आमे सेमती पेशेंट जेतबेल को नुआ नुआ आस्तले आमे पठौतलु एम्बुलेंस डाकी गोटे पिला जीवो डायलिसिस करिवो तांकु नै कि आसीबो आमे से कष्ट भी करछु तापरे आस्ते आस्ते सेतिबे कि डायलिसिस यूनिट भी आरंभ कलु तापरे डायलिसिस यूनिट रो गोटे रूम गोटे जगह रे होतला पुनी सीरियस पेशेंट माने क्रिटिकल केयर यूनिट रु आईसीयू रु डायलिसिस यूनिट के आसीबा पे असुविधा होबे पुनी गोटे पिला आसीबो ताकू वेंटिलेटर रखिबो बैगिंग करके नबो सेतिबे वर्तमान आमे आईसीयू सेटअप करछि जो थरे डायलिसिस भी हे परियो. How do you plan to compete with you know brand जोटा हमें कहतो जो मान को से नेशनल टैग गोटे लागी की थाए सेमिति हॉस्पिटल से तो how do you plan to compete, you know say जो तो स्टार्ट कर ले was that there in your mind? No, not really. Okay. Actually my principle is completely different. I don't like to run and compete and try to be a gold medal winner. But I just are a gold medalist, that I know. That's for sure anyway. Right. But I think I do my work and my concept is that तमे निजे निजर काम करथुबो तमे निजर गोल अचीव करिया पे जाउथुबो ताहले you will reach some place. तुम्हें जदि माने जदि आमे आउ का संगे कम्पीट करिया पे चाहिबा आम टार्गेट विल बी टू विन अगेंस्ट देम ताहले आमे हमर माने जेमती हेले भी मते विन करिया को पड़िबो लागिबो ताले आमे विभिन्न रकम उपाय खोजिया को पड़िबो किंतु निज काम करिके जदि आगेबो the fruits come by itself. You know, you must be seeing death from a close quarter mane almost every other day. So how difficult does it get as a, you know, not just as a doctor but gote, you know, gote human hisab re gote maniso hisab re kitte cost lage when you see you know death so closely? It am a profession. माने medical science treating ill patients is a profession. Right. हमको सही professional attitude नहीं कि काम करिया को पड़े. आमे जदि इमोशनल हे जिबा ताले डिफिकल्ट हबो. बेले बेले गोटे यंग पिलाटे थिबो तार देह बहुत खराब हे थिबो बापा मां सिंगल चाइल्ड हे थिबो आमे भी बेले बेले इमोशनल हे जाओ किंतु इमोशंस शुड बी रियली केप्ट अपार्ट. तापरे फैक्चुअल हमको फैक्चुअली कथा कहया को पड़े. You have to face facts. Okay, I think I mean, I know this was a little on a serious note question. So I'll go a little light before we take the first break. You are a brand in yourself. You know, you are in this particular line for, you know, more than 25 years. I think 30 years. And you have also now started your own brand hospital, Ashwini Hospital. So you are a doctor. You're also an entrepreneur. So mu apan ko jo ebe question ta pacharibi is a little tricky. Tell me what satisfies you more
जिते लोक मैंने डॉक्टर माया गंतायत को ना शुणिकी आपंकर अश्विनी हॉस्पिटल को आसती ना लोक मैंने अश्विनी हॉस्पिटल ना शुणिकी डॉक्टर माया गंतायत पाक आसती आम हॉस्पिटल स्टार्ट कला बेलू लगुला जे डॉक्टर माया गंतायत शुणिकी आसुँच बस भल लगुला से भी आगु भी शुणी शुणी आसुँ किंतु वर्तमान पे मु कहबी जे अश्विनी हॉस्पिटल को आग आसबे तापर पचारे आपण किए सेटा मत पचारे सब खुशी लगे मुझे अच्छी डॉक्टर महाकांत ओह आपण मैडम माने एमतिया तेणु को बहुत this question is very nice. I think that is why you are our business leader today. आमरो कथा आम business leader सहित आउरी जारी रहिबो बट गोटे छोट ब्रेक परे. Ma'am, आगे तो I have to say it's a beautiful garden that you have maintained. I can see lovely flowers. देखी पड़छी. In fact, if I'm not mistaken, डालिंबो गच्छ भी मते. So you know, tell me, ए सब काम मजरे गार्डन के मेंटेन हो बिल्कुल गार्डन किछि करेनी. मोर गोटे भलो गार्डनर अछि. आ बस जीवा आसीबा बेले टिके कोन दवा कथा इनपुट एटा सफा करे एटा आणे एटा लगा एटा धो दैट्स ऑल. बर्तन फिजिकली किछि मु करेनी. Maybe retirement pare I'll just do gardening. Yeah, because I've heard gardening is supposed to be a very stress kariba pe it helps. Ma'am, coming back to we were talking about hospital. Apan gote be hospital aram karchanti. We were talking about the challenges that are there. Ma'am, ajikali we are getting to hear a lot of commercialization is something which is a very crucial aspect. Sabbu jagar ame suniya ko paunchu. Everything is getting very commercial. Hospital healthcare रे भी हमको we get to hear reports bills re hela eport support and private hospitals are trying to sort of besi nei jauchanti adhiko luti douchanti and you get to hear all that. It is a problem. So tell me how because you also started one, what is your take on this entire thing? It's easily said that commercialization hi jachi. Business itself is a commercial activity which we have to, but there is an added thing that sabu business necessarily does not mean that you are commercializing and cheating people and taking money. But however, for every business to survive, for every organization to survive, we need money. Without that, it is impossible. You can only work for a certain period of time and then you will give up. Just one small fact I would say, that actually healthcare has become so expensive. Their equipments are so expensive that we need to taro annual maintenance contract achi, taro AC 24 घंटा AC लागिवो से equipment को बहुत costly है ची ऐसो जिनसा. I feel that केते गोटे hospital टिके access कर दो चंदी सेटा गोटे competition रे चाली ची माने a market driven thing, sort of thing. But the second thing is there has to be a regulatory body. Very true. That is in fact a need of the hour. Yeah, regulatory body jodi rahiba tahale konosi loko overbuild hebeni. Karan the regulatory authority will regulate. And abroad there are insurance companies, so insurance companies actually regulate. Karan semane paisa debe hospital ku tome overbuild kale kati debe. A through I'll go to another angle. Doctors manako jete they are considered next to God because they treat patients moriba loko ko bhi banchai nahi asanti, but at the same time doctors are also soft targets, particularly jo uthre critical patients ko sahita regular basis re deal karanti, neuro ho cardio ho tanku semane soft target bhi he janti jodi patient kete often patient or attendant mane take emotional hai ki hurt hai ki they start blaming the doctors completely for whatever has happened. So kemiti handle karanti ei type of situations? Sabu kamare risk achi, amo kamare te bahut risk achi. Aau ko organization ho, factory ho, they deal with
लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मशीनरी माने तार लाइफ नहीं गाड़ी तैयारी कले से तो तुमको कंप्लेन करेनि किंतु जेहेतु आम ह्यूमन लाइफ को नहीं काम करूँ किसी प्रॉब्लम है तो निश्चय कंप्लेन आसे से माने दुख लगिले से माने हमको ब्लेम भी करती किंतु कौनसी डाक्तर तो केबे हेले कौनसी रोगी को खराब करने काम करनी ना आम लोक मानकर टिके बुझिबा कैपेसिटी शक्ति कम जिते जहाँ हुए वी हैव टू हैंडल बेले बेले वायलेंट हो जाती आउ बेले बेले भी लोक भी जमती माने सबू गोठरे गोटे गोठ खंडिया लोक थे सेमती समस्ते खराब नुह मेजॉरिटी लोक भल बहुत भल नहले आम एत सर्वाइव कलु केमती ता भर गोटे दीटा तो खराब पड़े से माने ब्लेम करेंगे मारधर करेंगे कहे पैसा खाई दूची नहीं जाऊँगी लुटी जाऊँगी कहे मैम आई विल गो बैक टू आई मीन हॉस्पिटल विषय तो कथा बट आई विल गो बैक टिके फ्लैशबैक करी टिके यू नो आई विल गो टू योर कॉलेज एंड स्कूल डेज यू बीन ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड मत कहतु जो यू नो यू बीन ऑल्सो निम्हांस आपंकर गोल्ड मेडल भी आपन को मिली सो ए पर्टिकुलर लाइन रे इंटरेस्टा केमिति डेवलप कले मु तो मेडिसिन डिपार्टमेंट माने पोस्ट पीजी मेडिसिन रे करी डिसाइड करथिली सर्जन हेबिनी बोली डिसाइड करथिली तापरे मोर चॉइस थिला बिटवीन न्यूरोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी बिकॉज दे आर द टू मास्टर सब्जेक्ट्स देन आमर तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दवा को पड़े you know you have to get the seat in the right place the right sometimes you go by choice sometimes you get by chance मते मिलला डीएम न्यूरोलॉजी निमांस रे जेतु सेटा माने इंडिया रो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट I opted for that without even thinking that I should go to any other subject. So here I am from Nimans, neurologist. Good. So Mate ma'am, another thing is, you know, generally stroke is today one of the, you know, the second highest, largest cause for deaths. And मु जते कि डॉक्टर ऑफ कोर्स आई एम नॉट मु बहुत मेडिकल बट मोर टिके इंटरेस्ट रही छे ए लाइन रे मु बहुत पढ़े भी मु देखि छी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स there have been a lot of cases जो थोड़े young population जोटा होचंती they are you know stroke होचे and they are dying they don't even get to know they had a stroke drive करी कि we get to hear cases bike रे लोको drive करी जाउतला just fell down died and जणा पड़ला that he had a sudden stroke so काहे कि what is the cause that you know कि इतने young population भी आजिकली stroke रो victim हे होचंती I think lifestyle changes have really taken a toll on the health. So stroke in young has increased, and I'm talking of brain stroke. Yes. So and heart stroke though is always there. So you know food, कौन खाऊचंती, कितने घंटा सोऊचंती, stress that we take, all that contribute. Ma'am, on a serious question, मो मन रे आसुची आपनो lifestyle and food habits कथा कहिचंती. We tend to eat a lot of junk food today, and for which people like me tend to look very fat on television as well. So as a you are very slim actually. Actually, I don't know, but television I look. So is there any tips that I can get to lose some weight and look slimmer on television? so that I have a healthier lifestyle and I have a slimmer lifestyle. If you control your intake of food which has high calorie values, not high calorie values and low nutritious, you have to completely avoid and do exercises. Output by. Then it'll balance. I think what I'll do is, ma'am, mu upon to how take extra tips nebi so that mu how kichi episode par take patara dusi bhi on this show. So by the time I'm taking those tips, we'll take a short break. Kahingi ta par ame janiba ma'am ko family life bisare tankaro better half ko bisare. Let's take a break. वेल ब्रेक पूर्व मु कही कि आम आम बिजनेस लीडर को बेटर हाफ सहित भी भेट कर इनफैक्ट मुझे बस ड्राइंग रूम रे आम सहित अच्छा डॉक्टर सुब्रत जेना जो गोटे बहुत रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन भी ऑर्थो भी एंड दे आर अ डॉक्टर कपल इनफैक्ट हियर तो मैम यू नो आम कहूँ कथा बिगिनिंग होती मुझे आपको आरंभ करी पचारि अश्विनी
हॉस्पिटल विषय आपण मते करेक्ट करतले नाही सेटा मु नो आमे मिसिकी इट्स अ टुगेदर थिंग दैट यू बोथ हैव स्टार्टेड सो केमती सपोर्ट रहिछि संकर एई वेंचर आपनकर आरंभ करिवारे केते सहयोग देइचंती सर आपनको एक्चुअली सी सपोर्ट करना थी मु ताको सपोर्ट करूची आई शुड डू इट द अदर वे अराउंड ओके ऑलराइट so maybe it's 50-50 or it's 100-100 okay so it's just both of us have worked it together आमे स्टार्ट करिलु जहाँ भी डिस्कस करू एकाठी डिस्कस करू हॉस्पिटल केमती हबो डिस्कस करू तार आर्किटेक्चर केमती हबो डिस्कस करू सो इट्स ऑलवेज बीन यू नो एट एवरी स्टेप दी जण मिसिकरी करछु सो मैम तो कहले कि 50-50% रहिला आपण मानकर बिकॉज टू स्टार्ट दिस वेंचर बट मो तांको तो ऑलरेडी पचार साची बट पर्सनली आपण टू भी जानिया पे चाहिबे व्हेन यू डिसाइडेड बोथ ऑफ यू डिसाइडेड कि हॉस्पिटल आरंभ करिवे आपण को पई सबटू मोटिवेटिंग फैक्टर कोन थिला मो पई सबटू मोटिवेटिंग फैक्टर थिला द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैड एट दैट टाइम because when I went on to learn plastic surgery, I saw the huge amount of work that a plastic surgeon does, especially in managing the burns and patients injured in accidents. Accident माने सबले road accident कथा हम कहनी industrial accident जो थी हाथटा बहुत commonly injured ता पाई कि हम infrastructure आगे तैयारी करूँ. So that small hospital or clinic that we had in Jobra was very popular. You know, I mean, I could not keep a patient there for more than 2 to 3 days. Madam pai setale my pai absolutely there is no space. She used to see patients but keep patients elsewhere because it was such in demand. So ei jo demand ame dekhilu plus we could not provide space for her patients which are also increasing in number. And again she did not have the place to keep the equipments. So I'm a jaga khojil. So that is how we started. But ma'am, Tikim, since it's a doctor couple, I would like to know yours is a love marriage or is it an arranged marriage? I think it's not an arranged marriage. Okay. So obviously it's a love marriage. It's a love marriage. And we'll again go flashback to Kyauthriji, but if we can get how did you like to get together and meet? I'm the classmates, MBBS ru classmate. Okay. Tenu it's a long journey. From 17 years we know each other. I mean actually padila balu to initially to we didn't think that getting married or anything like that. But as usual, you know, aste you just become friends, then you grow up, then you think of marriage. Right. So that's that. From it's a long journey actually. Right. Ma'am, you have 2 daughters. You know, you have, and if I'm not mistaken, none of them has taken up medical. So generally, कौन हुए कि हमें देखो कि family रे गोटे doctor थिले, typically गोटे at least one of the kids takes up because that atmosphere थाए टिके घरे समस्त कोंती musician चो गोटे at least atmosphere अच्छी तो सी singer हवा film line रे की अच्छी तो चो अपन को none of the daughters have taken up any particular reason for that. Particular reason तो एमती कही हबनी. Actually आमे आम पिला को we gave the freedom of selecting their own career. आउ से माने हमको देखी करी हो कि आम सराउंडिंग्स को देखी हो कि आम एनवायरनमेंट को देखी हो से माने डिसाइड करी नांती जे डॉक्टर हेबे बोली सेते में आमे तो केबे फोर्स भी करिनो कि ना तो मैं डॉक्टर हबा उचित कि एमती करिवो कि सेमती करिवो. बड़ झिया सुमा सी खड़गपुर आईआईटी रू बीटेक पास करी तापरे से काम करथिला गोटे इन्वेस्टमेंट बैंक रे लेमन एंड ब्रदर्स सेठी 5 वर्ष काम करिया परे एबे एमबीए करछि यूएस रे वॉटन बिजनेस स्कूल रे. So she has got a job in Boston Consulting Group, so she'll be in that. The younger one is say arts. I'm a sabu science, say arts, say economics graduate. Say Delhi University to economics pass kala and she was the topper. Delhi University to topper. Say she got the Rana Day award for being the topper. Tapre masters kala London School of Economics, MPhil kala Cambridge.
एबे हार्वर्ड रे से रिसर्च एसोसिएट करछि रिसर्च करछि Ma'am, both of you have actually also traveled a lot, you know, Jio mane to achanti hi, and you know, you both also have traveled, bahare bhi padhi chanti bhi, and abroad travel karchanti. You've been consultant in hospitals in Saudi and ye also. So, ma'am, why did you never think of, you know, because generally bhabanti kare sethi to you get good pay also, you know, so tension is comparatively less. So, semti kebe strike kalani shu, amane bhi bahare settle achanti, to amane bahare hi rahiba, kahi ethi you know, never you felt never ever we felt beginning of the life beginning of our career mu Odisha asi boli bhabu nathli and all the credit of staying in Odisha goes to my dear husband se कहले हमें ओडिसा रे ही रहिबा ओडिसा रे ही काम करिबा ओडिसा लोकन को पई काम करिबा निजे करिबा हमें एठी जन्म नै छै हमें एठी करिबा आ कोन बाहर जे कोन करिया से जिंस तो करिबा ना How do you both like to de-stress? Do you like to go out and watch a film, or you know, bhabandi ki nahi ame etti din ao ebe काम करवानी ame jiba vacation रे 4-5 दिन जमा किछि no work no nothing, we want to just go enjoy माने किछि अछि? Do you have some yes ame yeah time tested आमे बहुत जाऊ बाहर को मझे मझे जाऊ 10 दिन 15 दिन बुलिया पे जाऊ कि 7 दिन जाऊ एबे तो बहुत जाई होनी 7 दिन 5 दिन एमती जाऊ आउ टीवी टेलीविजन इज रियली de-stresses us मूवी भी जाऊ we also love movies. So ma'am, you know, coming back to where we were all discussing itte din so ki there is stress, no doubt about it, there are challenges, again no doubt about it. So what at the end of the day when you come back home, you know, what makes this entire, you know, jaha bhi apna efforts dei chanti gote hospital te thiya kare chanti gote you know, dedicated neuro and trauma center apna Odisha re aram kale, so despite all these you know, problems, stumbling blocks jaha bhi apna kuhantu, what is it that actually gives you that satisfaction, that happiness from within when you come back home at the end of the day? It's a professional satisfaction. It's like a painter after he paints something and you know everybody appreciates, he likes it or she likes it. Tapre sidha it doesn't give up because he's painted a beautiful thing. It doesn't give up. It, you know, you want to do more and you want to paint more. You want to do better things. Amar bhi sahi jinsa we hospital kalu ठीक अछि we achieved some amount of success. We are trying to develop health education. even nursing school भी start करछु सेति पे कि तले कि हमें education sector रे भी माने paramedical education sector रे भी हमें भलो education दबु सेटा होची हमर नियम माने पैसा कमेबु सेटा नुहे भलो education दबु आ गोटे हॉस्पिटल भी एकदम डेडिकेटेड एक्सीडेंट हॉस्पिटल भी स्टार्ट करछु ऑलरेडी त बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट ही हेची एई पाखरे करबो जेते पंत भगवान हमको देचंती साहस जोश will continue to work. That's, I think, a wonderful thought. Amane we say, I think, ame gote there is a, you know, chuavadu amane padhi ki asu that service to humanity is service to God. आज आम जानिले डॉक्टर माया गंतायत सक्सेस स्टोरी विषय जड़े डॉक्टर भी जड़े एंटरप्रेन्योर भी आसी बहुत भल मेसेज देले डॉक्टर कलीग्स को पाइबी और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स पाइबी नेक्स्ट वीक मु गोटे बिजनेस लीडर को लेके आसबी और जानिबा आमे तांको कहानी तांको ठू टिल देन नमस्कार.